Most people think you cannot prepare for NEET PG without spending thousands on expensive apps, paid coaching, and whatnot. That in itself wastes so much of our time, breaks our confidence, and wastes our money. NEET PG is not a content heavy exam, it's a revision heavy exam. The moment you understand this, that's where your real preparation begins. That in itself improves your scores like crazy. Hello, everybody. I'm Dr. Ritavang Gangopadhyay and I cleared NEET PG using these free resources and without an iPad. Now, today in this video, I'm going to tell you exactly how to do that without any fear mongering, without fake motivation, and also realistically. I have divided this video into a few sections. How to break down your syllabus, how to make sure you get your free videos and study resources, MCQs, most important for NEET PG, and lastly, how to make sure your revision is happening properly. So, let's get started, guys. The first step in doing this is understanding how NEET PG works. As I said, NEET PG is a revision heavy exam. So the same topics get tested again and again. Either वो direct question देंगे और image based और clinical scenarios. So पूरा main notes पढ़ोगे, सभी videos देखोगे और पूरा syllabus को equally पढ़ोगे तो that is your biggest mistake. The most important thing you need to do here is topic prioritization. अभी किसको priority दे? So two things you need to do. First step, go to the official NBE website, official syllabus को download करो. Second step, and ये similar या most important step है कि go to Google, simple Google और INICET, NEET PG और FMG की last 5 years का जो papers है आपको free में Google में मिलेगा, that you download. Take 2 pens for previous year topics. One pen is the previous year topic आप circle करोगे and दूसरे highlighter pen से you will mark the exact जो question आया था and you will see so many are the same. The two are overlapping, same topic, same line से these three exams में question are coming and that will narrow your preparation like crazy. Simple Google, guys. So when you just cut out this unnecessary noise, you will know exactly what to focus on. एक बार read is useless. Minimum 10 या 15 बार you have to study the same topic either through MCQs और ऐसे ही पढ़ो. Now very important topic is videos. Now Prep Ladder, DBMCI, these release these LRRs before the exam. And if you go to their YouTube channels, you will see these LRRs for short subjects are 4 to 5 hours long and for long subjects these are 7 to 8 hours long. Are you understanding, guys? 7 to 8 hours long content. These videos are so dense that these are enough for the exam. These are not just PYQs, these are PYTs. I have studied only from this, so I know that these at least यहाँ से आपको 150 questions तो आएंगे ही आएंगे. You will think, oh, only 8 hours of this subject, only 4 hours of this subject. But trust me, when you sit with all your 19 subjects, these 8 hours or these 4 hours are no child's play. Now you will say, video तो देख लिया. Where will I get my study material from? Most of these apps, अगर आप ऐप में जाओगे और इन ऐप के टेलीग्राम चैनल्स जो है, they release the exact PDF. So आप वीडियो देखोगे और exact annotated PDF उसी का ही मिलेगा. A lot of teachers, like for example, I studied microbiology and pathology from Preeti ma'am. So Preeti ma'am has her own Telegram का channel where she used to say schedule कि आज ये video upload होगा, आज वो video upload होगा, and also these teachers, for example, Preeti ma'am, Neha Taneja ma'am is for community medicine, they have their own Telegram channel जहाँ पे भी वो अपना annotated PDF share करते हैं. These Telegram channels are also very nice because वहाँ पे they also listen to our doubts, answer our questions, and also वो MCQs देते हैं. Another very important thing is a lot of people like to study from Dr. Zainab Vora. I personally attended उनका जो 4th day offline BTR है. So even in Cerebellum, you will see that a lot of old BTR videos are for free. So total almost like 8 to 10 BTR videos are completely free and all the mega BTRs are available in YouTube. So if you are somebody who is having a lot of FOMO and you want to study from Zainab ma'am, those videos are also freely available in the Cerebellum app and also in YouTube.
So now let's see where I studied from. These are my personal preferences. I have actually watched a lot of free videos because मेरे पास और कोई video source नहीं था. And from these are the ones which I found the easiest to learn from, and these are also the ones I could easily got the PDFs from. मेरे पास PDFs है. अगर आपको PDFs चाहिए भी easily तो comment करो. I'll send my entire free sources to you. So these are the sources that I used. If you want, you can take a screenshot of it. I will share all of them. In the ones where I have given two sources, it will be my advice to first see the first source and then the second source, because that's how I studied it and that is how I think you will understand better. Apart from that, if you want the exact videos that I have seen, tell me. I will make a video on that, and I have all the PDFs as per the videos that has been used. So if you want the PDFs, tell me, write down in the comments. I will make a Telegram group and share all the PDFs along with the specific videos that I have used. So guys, these are the sources. You can see the sources. If you have any questions, just tell me. I hope I have not missed anything out. So study resources की बात कर रहे थे, तो there is one study resource I used and that was the BTR book. So I did not have the BTR का subscription, so I bought the book from Amazon और I think Flipkart से मैंने buy किया था. It was a 1500 का book. BTR और bonus BTR दोनों मिला था and it was fully annotated. And later मैंने मैम का क्लास अटेंड किया था ऑफलाइन bonus BTR का, वो 6 hours का होता है, तो वो इट वॉज परफेक्टली एनोटेटेड एंड मैंने उसी से पढ़ा था. शुरुआत में आई डिड नॉट नो अ लॉट अबाउट फ्री रिसोर्सेज. आप एक बार कुछ मतलब मेन वीडियोस और उस सब्जेक्ट के किसी फैकल्टी से आप अगर पढ़ लोगे एक बार, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा. तो उसके बाद अगर आप BTR पढ़ोगे तो आपको समझ में भी बेटर आएगा. एंड BTR इज अ वेरी नाइस सोर्स कि वो इटसेल्फ आपकी छोटी कॉपी है प्री एग्जाम डे. And there is a very common thing ki is BTR enough? I'll make a separate video on that if you guys want. बताना अगर चाहिए तो that is the study resources I use. Now, hands down, the most important thing about NEET PG preparation, MCQs. So I had Marrow plan B for half of my preparation and half के लिए नहीं था. तो तब मैंने क्या किया? So first of all, what I used to do is कि मैं GTs देती थी. Okay, so first में I used to do full GTs and then I used to review. But ऐसे I saw कि मैं रोज नहीं MCQ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और रोज लास्ट के 3-4 months आपको मिनिमम 100 MCQs करना चाहिए पर डे, रैंडम, नॉट स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट का और ये टॉपिक का. रैंडम करो बिकॉज आपके ब्रेन को रैंडमली ही MCQs मिलेंगे. योर ब्रेन विल नॉट नो कि ये कौन सा सब्जेक्ट है और ये कौन सा टॉपिक है. सो रैंडम करो. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आई यूज टू ओपन अ फ्री GT ऑफ मैरो बिकॉज मैरो का एक्सप्लेनेशंस बेस्ट है. अगर आप मैरो का एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ोगे ना, दैट इज इनफ. सो ओपन मैरो, ओपन अ GT फ्री. बहुत सारे फ्री GTs है गाइज. फॉरगेट मैरो, एवरी ऐप हैज एटलीस्ट 20 फ्री GTs. सो अगर आप आज भी देना स्टार्ट करोगे आपका फिनिश नहीं होएगा. सो आई यूज टू ओपन अ GT and after giving around 2 or 3 questions I used to just submit it. So now the entire GT में I have the entire GT and उसी को I used to do 2-3 दिन में, because now I have the entire MCQ bank for free. Another very nice MCQ source is Cerebellum. Cerebellum का GTs are amazing because every topic, every जो question होता है उसका video explanation है. So you are getting in the free GTs. So you are getting video explanation from the best faculties. Another thing which is very good in TNDs. TNDs can change your game guys. YouTube में जाओ और आप एक क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, सी आपका आंसर क्या है. अगर वो एग्जामिनर से अगर वो जो दे रहे हैं उनसे मिलता है तो स्किप कर जाओ. इफ योर आंसर इज रॉन्ग, अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन क्या है and just move on. Apart from that, if you want to spend some money, there's the Reflex app. It is pretty affordable. Pre-PG is pretty affordable, and PW Med is also pretty affordable. So if you want, you can use these. सो गाइस, ये एक टेलीग्राम ऐप है. यू कैन सी कि सभी टीचर्स का जो आप मैं फॉलो करती थी, मैंने उनका सबका ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है एंड उनका अपना टेलीग्राम चैनल है. व्हाट आई वांट टू शो यू इज वी एंड अप जॉइनिंग अ लॉट ऑफ ग्रुप्स एंड देन इट बिकम्स वेरी क्लटर्ड. हाउ टू अवॉइड दिस इज, आप ये सर्च बटन पे जाओगे, यू विल
गो टू द फाइल्स ऑप्शन और यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वहाँ पे जो सेंड किया हुआ है यू विल गेट इट हियर। सपोज आपने आज एक वीडियो देखा है नेहा मैम का, आप इजीली वो वीडियो का जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे, और जो आपने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड्स ऑप्शन में यू विल गेट इट साइड बाय साइड। मैंने कुछ नहीं किया है डाउनलोड, इसीलिए इट इज नॉट कमिंग, बट अगर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मेरा एक साथ सभी स्टडी रिसोर्सेज यहाँ पे एक साथ यहाँ पे होता था। सो दिस इज हाउ यू कैन कंसोलिडेट योर रिसोर्सेज। Guys, a very underrated resource are Anki cards. So if you want Anki, comment करो and I will give you my Anki decks. They are great because Anki का जो concept है ना, it is like आपको same MCQ, same Pearl, they will keep showing you so many times कि वो आपका permanent memory हो जाएगा। अगर आप आज 10 cards रिवाइज कर रहे हो और कल 20 कार्ड्स रिवाइज कर रहे हो तो आज का 10 कार्ड्स आपको कल 20 रिवाइज करने के टाइम भी दिखेगा। एंड दिस विल कंटिन्यू व्हेन यू आर डूइंग 100 एंकी डेक, 100 एंकी कार्ड्स, 500। सो some of these same cards keep coming so many times कि वो becomes permanent memory. And as I said, NEET PG is not a test of how much you know. NEET PG is a test of how much you remember. Another free resource जो मैंने यूज किया था is this chart. As you can see guys, weightage of subjects is very important because वो आपको पता होना चाहिए लास्ट डे रिविजन के लिए और इन जनरल कौन से सब्जेक्ट में आपको नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा देना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड्स आर चेंजिंग। पहले एनाटॉमी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अभी एनाटॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पीडियाट्रिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, अभी पीडियाट्रिक्स का इंपॉर्टेंस इज बिकमिंग लेस। Lastly guys, I have made this entire video saying you can do this, you can do that, but a lot of things you have to figure out for yourself while doing in the process. For example, I used to think कि मैं तो बहुत पढ़ रही हूँ, but one day a friend suggested that you should do a to-do list. वो करता था, so I used to be like okay, I'll also do it. And every day I used to make a very realistically बनाती थी मैं अपना to-do list. But somehow end of the day I used to see कि वो suppose वो to-do list में 6 things अगर होते थे तो उसका 4 भी टिक नहीं हो रहा है। So these things you can do. This will make sure कि you are not just studying, you are studying properly and output हो रहा है आपका, सिर्फ input नहीं दे रहे हो आप। ऐसे बहुत चीज़ें आप अगर खुद करोगे तो आप फिगर आउट करोगे। फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ रॉन्ग डायरी जहाँ पे आप जीटी का मिस्टेक्स लिखोगे, उसको रिवाइज करोगे, ऐसा बहुत थिंग्स था। यू विल रियलाइज थ्रू द प्रोसेस, ये आप खुद रियलाइज करोगे और इसी से आपका दिमाग में भी घुसेगा। एंड अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग फ्री एप्स प्रिपरेशन कि you have to show up for yourself. Discipline is the most important thing. If you are seeing this video, it means you have to anyway clear NEET PG. So आप मैं free में prepare कर रही थी, ये आप you cannot use this as an excuse 1 year later. So you have to make sure कि अभी से you have made up your mind, you have had your resources. It's very easy to clear with this because I have done it, you can too. And show up every day consistently and properly. So yeah guys, that's it. If this video helped you, like कर देना and comment करो। if you need anything से help अगर लगेगा तो बोलना मुझे, and subscribe कर देना because we will be having a lot of similar discussions on this topic. Bye guys, all the best for your preparation. If I can do it, so many others can do it. Of course आपसे भी होगा।